I welcome you all in today's our online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the words of Holy Quran. Then we moving towards our further lecture. In previous session we was discussed about the contribution to fault, and up till now, if anyone of you will have any kind of question or difficulty, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. Now, moving towards further the discussion about the nature of faults. Short circuit fault current. So this is the main aspect. So the nature of faults is short circuit fault, that is the fault current, and open circuit fault, that is related to the voltage. So short circuit fault is related, or we can say current oriented, and open circuit fault is like voltage oriented. In terms of seriousness of consequences of a fault, short circuit are of far greater concern. So short circuit is a far greater concern because it is related to the current prospects. Then open circuit, through some open circuits present some potential hazards to person. Classification of short circuit faults are categorized into three aspects. Up till now, can anybody confirm me if my voice is clear with you guys and screen share as well? Can anybody confirm me? Is my voice clear and screen share with you guys as well? Is it fine? Classification of short circuit faults are three-phase faults with or without earth connection, and two-phase fault with or without earth. That is the inclusive aspects of earth or without earth. Single phase to earth fault, it's another aspect. Classification of open circuit faults, it is related with a single phase open circuit, and in open circuit fault also two-phase open circuit and three-phase open circuit. Causes of faults are the insulation, however, may break down either by effect of temperature and age or by the physical accident, so that the current then flows an abnormal path, generally known as a short circuit fault. We all know about this thing because most of the thing we already discussed in our previous session. Any abnormal operating state of a power system is known as fault. So basically, we are very well known about the fault prospects and aspects. And in detail, we are also aware about the specification of faults. Similarly, we further continue the session with the nature of fault
as a fault in general consists of short circuit as well as the open circuit. The open circuit prospects and short circuit prospects, in which the respective of voltage and current oriented aspects are also followed in this kind of faults. Open circuit faults are less frequent, and short circuit faults are often produced in our system, and often they are transformed into short circuit by subsequent events. Most of the time, all the subsequent events and possibilities we already discussed in our previous session about the nature of fault. Consequences of occurrence of faults are expensive damage to the equipment due to abnormally large currents, unbalanced current, and low voltage produced by the short circuit. So these are the further prospects. Okay, further, the next point is explosions are also consequences of occurrence of fault that which may occur in equipment containing insulating oil during short circuits and which may cause fire resulting in serious hazard to personnel and to other equipment. Severe drop in voltage which is likely to cause the individual generators in a power station or a group of generators in different stations which are the combined by the interconnect system to lose synchronism and fall out of step with consequent splitting of the system. A risk of synchronous motors in large industrial premises falling out the step and tripping out. So these are the possible consequences which are produced during the. So some people are waiting, so I have to end them. Abdul Sama has serious connection problems now these days. Further, we moving towards the zone of protection. This is the localities of zone in sense of protection aspects. Then an electric power station, that is a power system, is divided into zones in the sections of operations. Zones of protection, as mentioned in below mentioned figure, each zone of protection contains one or more components of the power system in addition to two circuit breakers. Meanwhile, you can see one zone of connection is connected further zone 2 with the connection of circuit breaker, and further this zone we called a line of transmission line, and further it start and end with the circuit breaker connection, and further the transmission power line is also concerned connected with the power circuit breaker power circuit breaker. Further, another line another transmission line also connected here, which is also linked with another line of secondary transmission line, and in this aspect you can see it is an open circuit. That is the zone number 5. Zone number 1, 2, 3, 4, and at the end that is the point. Zone after zone number 5, it is also would be start zone number 6, which is also connected with the
common bus bars of lines and further start and end with the connection of circuit breaker. So up till now, anyone of you if have any kind of question, please feel free to discuss. I will answer your question. Otherwise, I continue the session. Hopefully, all the things are clear. Each of zone protection contain one or more components of a power system in addition to two circuit breakers. In addition of two means starting circuit breaker, and after operation of one other circuit breaker is also connected in this aspect. So this is the main thing of connection stream, that is in starting and ending. Both the end, the protection equipment developed by the network of protection scheme. For a fault with within a boundary of zone, within a boundary means one boundary is end, so another boundary of another zone would be start, and these are the interconnection of protection scheme sharing in between zone number 1 to zone number 2 and further so on at the end till to zone number 6, which is the end one. So the protection system responsible for protection of the zone acts to isolate, which means if a fault is produced in the line of bus bar, so the circuit breaker would be shut down and tripped in fault condition, then the system of generator would be saved by the short circuit and abnormal condition. As well, this bus bar is also be prevent from the fault, which also be protection scheme would be operated by the circuit breaker, and the fault cannot be in by another zone of respects. That's the reason we are design and implement the protection scheme at the two ends as a topology of protection network. Further, the protection system responsible for protection of the zone acts isolate. If a protection scheme cannot operate in the operation of fault, then the fault would be inter-existing system and the whole system would be affected by a particular fault prospects. Then we can say the instability would also be happening in all over the system from starting to ending of generator to generation to distribution and utilization respectively. So responsible for the protection of zone acts to isolate by tripping circuit breaker, the operation which I already discussed with you guys, everything within that zone from the rest of the system. So this is all about the zone protection with the block diagram consequences. So can anybody tell me that to divide a whole power system into a zone is a good scenario or not? Can anybody tell me, is it a good scenario or not? Sir, it is a good scenario. Uh, Okay, and how can you justify this one? सर बिकॉज इनको जोन्स में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ट्रबल शूटिंग में काफी आसानी हो सकती है सर हमें. जी जनाब, और कोई इसमें एडअप करना चाहेगा? हमारे साथ और मजीद स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग भी अपना आउटपुट दें कि जिस तरह शेरोज साहब ने बताया कि हमारे जोन की वजह से हम ट्रबल शूटिंग करना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन इसके अलावा और भी क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं और भी क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं एक ओवरऑल पावर सिस्टम को जोन में डिवाइड करने से? क्या उसके फायदे होते हैं? कोई और शेरोज साहब के अलावा बताएगा?
ओके एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये मैंने थोड़ा सा रीड किया, उससे मुझे ये समझ आया कि अगर आपके जो जोन है उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो जोन वाइज आपने डिवाइड कर दिए, तो उन जोन वाइज आपने प्रोटेक्शन स्कीम दी है, सर्किट ब्रेकर लगाए हैं सर, बिल्कुल तो वो आपकी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन जरा सर इनहेंस हो जाती है कि आपके हर जोन के लिए एक सर्किट ब्रेकर है, तो वो इक्विपमेंट सेफ्टी वगैरह सर उसके लिए शायद। जी, ये भी आपने दुरुस्त फरमाया है शरूर भाई। असल में यही इसका फायदा है कि जब हम जोन नेटवर्क के अंदर अपने पूरे पावर सिस्टम को डिवाइड करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो प्रोटेक्शन स्कीम हम इसके लिए इंस्टॉल करते हैं, डेडिकेट करते हैं, तो उसकी डायरेक्टली प्रिवेंशन फ्रॉम फॉल्ट एग्जिस्टिंग जोन के साथ साथ दूसरे जोन को भी हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अगर इसके इंस्टेंट ऑफ के अंदर हम पूरे पावर सिस्टम में एक ही प्रोटेक्शन स्कीम लगा दे बनिस्बत इसके कि जोन में डिवाइड करके अलग अलग प्रोटेक्शन स्कीम इंस्टॉल की जाए, अलग अलग रिले सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया जाए ताकि इसकी प्रिवेंशन हो सके, तो ये एक बहुत बेहतर आइडिया है और इससे इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ जोन की प्रोटेक्शन के साथ साथ पूरे पूरे पावर सिस्टम की प्रोटेक्शन हो सकती है। दूसरी बात सबसे अहम है कि अगर एक सिस्टम के आपने जोन में जब डिवाइड कर दिया पावर सिस्टम को, तो फॉल्ट अगर करने के नतीजे में इसकी प्रोटेक्शन स्कीम काम कर जाएगी और दूसरे सिस्टम को उससे प्रिवेंट कर जाएगा, और ओवरऑल सिस्टम जो है उस फॉल्ट को आइसोलेट करते हुए बाकी सिस्टम को महफूज रखा और प्रिवेंट रखा जा सकेगा। सबसे अहम सिनेरियो ये है इस चीज़ का। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में बाकी सब लोगों ने समझ लिया होगा इसको। कोई सवाल अगर यहाँ तक किसी का है फर्दर तो आप लोग जरूर पूछें फर्दर, तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो हम इसको रीड आउट करेंगे और इसको समझेंगे कि इसके बारे में फर्दर क्या बात की जा रही है। The circuit breaker are inserted between the components. We already seen this thing in the zone protection diagram. So the essential component for protection and primary protection, the circuit breaker is one of the best thing. The component of the zone and the rest of the power system. Thus, the location of circuit breakers helps to find the boundaries of the zones of protection. अच्छा, ये चीज भी इस बात की मरहून मिन्नत है कि जब आप एक प्रोटेक्शन स्कीम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो सर्किट ब्रेकर से भी आप काफी हद तक ये अंदाजा कर लेते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन स्कीम यहाँ तक खत्म हो गई क्योंकि यहाँ का सर्किट ब्रेकर अनदर कंपोनेंट या पावर सिस्टम को ड्राइव कर रहा है। Thus, the location of circuit breaker helps to define the boundaries of the zones of protection. The neighboring zones, जो के अड़ोस पड़ोस के zones होते हैं, in between the existing zone की मैं बात कर रहा हूँ, zone protection are made to overlap so as to ensure that no part of our system remains without protection. However, occurrence of fault with in the overlap region would trip more number of circuit breaker than the minimum necessary to disconnect the fault element. तो फर्दर अगर आपका कोई फॉल्ट अगर हो जाए आपके उस जोन में जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ जोन में, तो आपका वो सिस्टम आइसोलेट हो जाता है ओवरऑल पावर सिस्टम से, और उससे पहले के सिस्टम जो लगे हुए होते हैं उनको कोई पावर सप्लाई नहीं मिलती। अगर हम जनरेटर के एंड पे देखते हैं तो फिर जनरेटर फिर उसको पावर सप्लाई नहीं दे पाता और उसके सिस्टम को आइसोलेट हो जाता है, और अगर वो ट्रांसमिशन के एंड पे होता है तो फिर उसका ओवरऑल एस्पेक्ट जनरेटर का एंड पे पावर सप्लाई वहीं तक स्टक रह जाती है उसके सर्किट ब्रेकर तक, और ट्रांसमिशन लाइन फर्दर आगे सप्लाई नहीं कर पाती डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन और सेकेंडरी पर्सपेक्ट ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन को। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ओवरऑल आपका जोन आइसोलेट हो जाता है और जो फॉल्ट के एस्पेक्ट और पर्सपेक्ट होते हैं उससे सिस्टम आपका प्रिवेंट कर जाता है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। Up till now, anyone of you, if have any kind of question, difficulty or query, please feel free to discuss. I will answer the kind of things. Otherwise, I continue the session further. Cost, if we talk about the cost, the maximum protection at the lowest cost possible. So this is the uh, deep thing.
Primary and backup protection, it is also a necessary aspect. कोई बताएगा what is the difference between primary and backup protection? ये चीजें क्या होती है? What is the difference between primary and backup protection schemes? सर ये बैकअप प्रोटेक्शन, अगर आपने सर एक बार लैब में बताया था कि अगर अगर शायद यही है इसका आंसर कि अगर एक ब्रेकर ट्रिप ना हो और किसी भी वजह से, तो उसी के सीरीज में एक आप दूसरा ब्रेकर लगा दें ताकि वो ट्रिप हो जाए। सर शायद ही, बाकी का Sorry for the interruption. Further, we continue. मैंने सवाल पूछा था what is the difference between primary and backup protection schemes? तो कोई भी जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है हमारे साथ, तो काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि जानते हैं इस बात को. What is the difference between primary and backup protection? Yes. Primary protection schemes of network के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. The primary protection schemes ensure quick and selective clearing of the fault within the boundary of the circuit element it protects. Primary protection as rule as provided for each section of an electrical installation. सो प्राइमरी प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में ये बताया जा रहा है कि प्राइमरी वो प्रोटेक्शन स्कीम होती है जो जस्ट एट दी स्टार्टिंग लेवल पे लगाई जाती है और वो नॉमिनल ऑपरेशंस और फंक्शनैलिटी को ऑपरेट करने के लिए इंस्टॉल की जाती है. और अगर फॉल्ट अगर होता है तो ये जस्ट वन मूवमेंट पे डील की जाएगी. इसके साथ कोई अनदर स्कीम नहीं लगी हुई होती कि अगर ये प्राइमरी प्रोटेक्शन स्कीम फेल हो जाए तो इसके बैकअप पे कोई दूसरी प्रोटेक्शन काम करे. तो यही मेन डिफरेंस होता है प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन का. प्राइमरी सिर्फ सिंगल प्रोटेक्शन स्कीम होती है. कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्शन, क्या वजह बनती है प्राइमरी प्रोटेक्शन की कॉजेज ऑफ दैट इट वुड बी फेल इन फ्यूचर. सो प्राइमरी प्रोटेक्शन में फेल बिकॉज ऑफ फेलियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग. नंबर वन, करंट वोल्ट और वोल्टेज सप्लाई टू दी रिले. आप करंट या रिले सप्लाई कर रहे हो रिले को, तो इनके नतीजे में आपकी प्राइमरी प्रोटेक्शन बार दफा फेल हो जाती है. डीसी ट्रिपिंग वोल्टेज सप्लाई, अगर आपकी ट्रिपिंग सप्लाई जो है वो डीसी की ट्रिपिंग सप्लाई है, डीसी इंटरप्ट हो गई तो प्राइमरी प्रोटेक्शन काम नहीं करेगी आपकी, क्योंकि डीसी ओरिएंटेड normally are by the battery. Protective relays, most of the time they are also be fail due to its mechanical stiffness, due to jamming, due to other kind of humming, due to the old uh, terminologies and technologies of relays. So these are also the causes of protection relays failure of the primary protection.
ट्रिपिंग सर्किट्स बाज़ औक़ात इस तरह के हमारे लगे हुए होते हैं जो कि नॉर्मली फॉल्ट अकरिंग के दौरान वो काम नहीं कर पाते, जिनका रिजल्ट ये होता है कि देन वो अपना आउटपुट परफॉर्म नहीं कर पाते और उनके नतीजे में वो स्ट्रक हो जाते हैं एट द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट। और जब उन्हें वो अपने स्कीम को इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्शन करनी है, तो उस वक्त वो स्ट्रक रहते हैं और डायरेक्टली वो फॉल्ट का इम्पैक्ट सिस्टम में आ जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सर्किट ब्रेकर का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्राइमरी प्रोटेक्शन फेलियर के नतीजे में। बाज़ औक़ात जो चार्जिंग मैकेनिज्म सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, दे आर नॉट चार्ज एंड default some of the time if the circuit breaker cannot work due to some kind of internal weather and the mechanical electromechanical other kind of effects, if it's not work, then directly fault current would be in the system and it also be uh, affect the whole system and fault would be in all over the system. So these are the five aspects by which the primary protection would be failed. Further, we are moving toward the backup protection. So after the primary protection, we are discussed about the backup protection. Backup protection is the nature given to a protection which backs the primary protection whenever the later fails in operation. The backup protection by definition is slower than the protection because it always coming after the primary protection. If it's failed, then it will be work. So its response time, some of time it would be lower as compared to the primary protection scheme. The design of the backup protection needs to be coordinated with the design of primary protection schemes. So these are the main difference between the primary and backup protection. So आपके लिहाज से प्राइमरी प्रोटेक्शन बेहतर है या बैकअप प्रोटेक्शन बेहतर है? व्हाट डू यू थिंक? कैन एनीबॉडी कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट? सब प्राइमरी बेहतर है। प्राइमरी बेहतर है जी। शेरोज साहब आप बताएंगे कि बैकअप बेहतर है या प्राइमरी बेहतर है? सर मुझे प्राइमरी सर बेहतर लग रही है। प्राइमरी बेहतर लगती है जी जी। तो दोनों का जवाब असल में गलत है ये। और जवाब ये है कि खाली प्राइमरी लगना सोल्यूशन नहीं है सिस्टम के लिए और खाली बैकअप लगना सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है एज अ प्रोटेक्शन स्कीम। याद रखें, सिस्टम की जो इमीडिएट प्रोटेक्शन होती है वो उसकी प्राइमरी होती है, लेकिन अगर प्राइमरी फेल हो जाए तो फिर सेकेंडरी काम करती है उसकी जगह, ठीक है, जिसे हम बैकअप प्रोटेक्शन भी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोटेक्शन मीन्स बैकअप प्रोटेक्शन। तो अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फॉल्ट काम ना कर सके तो फिर जो बैकअप प्रोटेक्शन होती है वो अपना रोल प्ले करती है और उसके नतीजे में आपका सिस्टम जो है वो फॉल्ट से प्रिवेंट हो पाता है, सेव हो पाता है और उसमें फॉल्ट का चांस काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में जो प्रोटेक्शन स्कीम इस्तेमाल होती है, दीज आर द कॉम्बिनेशन of primary protection as well as the backup protection. So the combination of primary and backup protection make a system more feasible as compared to the single entity of primary and as well the backup protection. I think you got my point up till now. जी सर। तो सबसे अहम चीज़ ये है मेरे भाई कि जब भी हम प्रोटेक्शन स्कीम की बात करते हैं तो हमेशा हम उन प्रोटेक्शन स्कीम्स को इंस्टॉल करना चाहिए जहां पर इन दोनों चीज़ों का प्रोविजन हो, यानी प्राइमरी भी और बैकअप प्रोटेक्शन भी। अगर प्राइमरी हमारी खुदा न खास्ता किसी वजह से काम नहीं करती, उसकी रिले स्ट्रक हो जाती है, उसकी सप्लाई कहीं से कट ऑफ हो जाती है, तो उसके बैकअप पे एक बैकअप प्रोटेक्शन होगी जो कि इंस्टेंट ऑफ प्राइमरी काम करेगी इफ द प्राइमरी फेल्स ड्यू टू सम काइंड ऑफ internal external effects or factors. So the combination of primary protection scheme and backup protection scheme would be vital. जी यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर एक बार आपने लैब में बता रहे थे आप जी कि अगर लेट से सर एक ब्रेकर है और वो किसी वजह से ट्रिप नहीं हुआ
जी वो जी ऐसा जैम हो गया या जी जी कुछ जी। हो गया, तो उसी की सीरीज में आप एक और ब्रेकर लगा देते हैं ताकि एक ना हो तो दूसरा ट्रिप हो जाए। सर हाँ ये बैकअप में आएगा या ये? जी, ये बैकअप में भी आएगा और जरूरी नहीं है कि हम सीरीज में लगाएं, हम पैरेलल में भी लगा सकते हैं, पैरेलल ऑपरेशंस में भी लगा सकते हैं, सीरीज में जरूरी नहीं है, पैरेलल में भी लगा सकते हैं, दोनों टोपोलॉजी सही। फॉलो होती हैं। पैरेलल में और सीरीज में फायदा ये होता है कि सीरीज में वो बेस्ट उसको ब्रेक कर देगा। पैरेलल में फायदा ये होगा कि अगर आपके एग्जिस्टिंग सर्किट ब्रेकर में मसला हुआ, उसके पैरेलल में एक बैकअप प्रोटेक्शन लगी हुई है, तो फिर आपकी सप्लाई उससे होती हुई गुजरेगी। और अगर डायरेक्टली सर्किट ब्रेकर उस वक्त काम नहीं किया तो दूसरा काम कर लेगा पैरेलल में। लेकिन अगर फॉल्ट अगर हुआ और एक से गुजरा उसने काम नहीं किया, दूसरा तो लाजमी काम करेगा पैरेलल में। तो दोनों ऑपरेशन सीरीज और पैरेलल इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये अमूमन मैंने सही सही स्पेसिफिक सर। एक स्कीम में बताई थी। मैंने हम एक कंपनी में काम करते थे, तो उसमें एक हॉस्पिटल के लिए हमने ये डिज़ाइन किया था नेटवर्क, जिसके मैं सीक्वेंस बता देता हूँ आपको। कि सबसे पहले जो हमारी सप्लाई आई थी, बल्क सप्लाई हॉस्पिटल में, वो दो थी 11 kV। हम फिलहाल एक की बात करते हैं। तो 11 kV की जो सर्किट सप्लाई आई थी, बल्क सप्लाई, वो इन हुई ऑयल सर्किट ब्रेकर में। ऑयल सर्किट ब्रेकर से वो इन होने के बाद, ऑयल सर्किट ब्रेकर से इन होने के बाद क्या हुआ था कि वो गुजरी हमारी सप्लाई फर्दर पीएमटी के बाद से एक सर्किट ब्रेकर, जो कि उसका स्टार्टिंग सर्किट ब्रेकर और नंबर वन सर्किट ब्रेकर था। उसके बाद सर्किट ब्रेकर से वो गई फीडर प्लग के अंदर, उसके फीडर्स होते हैं, ठीक है, सब स्टेशन की बात कर रहा हूँ। फीडर प्लग के बाद फिर एक और सर्किट ब्रेकर। फीडर प्लग के सर्किट ब्रेकर के बाद फिर वो जाता है, उसका के इलेक्ट्रिक का मीटर था, ठीक है, वहाँ सर्किट ब्रेकर नहीं था, वो सेंसिंग और मीटर वो सब था। उसके बाद जो लाइन गई थी वो गई थी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की तरफ, उसके पैनल का सर्किट ब्रेकर, ठीक। वो पैरेलल में लगा हुआ था, लेकिन एज अ प्रोटेक्शन स्कीम को काम कर रहा था। उसके बाद वो सप्लाई गई थी उसके फर्दर दीगर जो ब्रांचेस जाती हैं, डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के जाते हैं, उनमें वो गई, वहाँ के अलग सर्किट ब्रेकर। उसके बाद वो सर्किट ब्रेकर की जो फर्दर डिवीजन थी वो फ्लोर वाइज गई लाइन्स। अब ये जो फ्लोर वाइज डिवीजन गई है, उनके फ्लोर पे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, यानी पैनल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो छोटे होते हैं, वो फ्लोर के हिसाब से लगे हुए थे। एंड ईच ऑफ वन distribution board have its own circuit breaker, which is further divide the electricity into the small ampere of ratings to drive the single phase load as well as the three phase loads। ये स्ट्रीम थी जो सीरीज और सर्किट ब्रेकर की है। आपने तो यहाँ पे दो बताए, मैंने ये तकरीबन 8 से 10 तक स्कीम्स बता दी हैं, जो कि पैरेलल ऑपरेशन और सीरीज ऑपरेशन में चल रही होती हैं। पावर फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, एमसीसीबी, एमसीबी, और ये मैंने बल्क सप्लाई से लेके एक सिंगल फेज के लोड यूटिलाइजेशन तक आपको डिटेल में बता दिया। तो ये हमने उस जुमरे में उस वक्त बात की थी, और ये इस वक्त कवर भी हो रही है। अच्छा, यहाँ तक फर्दर अगर कोई सवाल किसी के जहन में हो, इफ यू हैव द काइंड ऑफ क्वेश्चन, होपफुली ऑल द थिंग्स आर क्लियर, देन कोई सवाल हो तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। यस सर, क्लियर। फर्दर वी आर कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ जोन प्रोटेक्शन। The region which we called a zones of power system that can be protected adequately with fault recognition and removal, resulting in isolation of a minimum amount of equipment. So that is particularly we specified that region called a zone. What are the requirements of zone? Which are all power system elements must be encompassed by at least one zone. All the power system elements of requirement are fulfilled by the at least one zone. Zones of protection must overlap to prevent any system element from being unprotected. No blind spots. So these are the specified for zones of protection must be overlap. Overlapping, I think you must understand about by this way, that zone 1 is overlap with zone 2, and zone 2 overlap with zone 3, zone 3 overlap with zone 4, and so on to that at the end zone 5 towards zone 6 overlapping with each other, because they are also preventing interconnecting with each of single zone by another. And protection scheme also be prevent one of zone by another as well. So I think you understand my point, that what is the overlap.
नो ब्लाइंड स्पॉट मीन्स वो जुदा जुदा नहीं होने चाहिए। एक जोन खत्म हो गया फिर आगे जाके दूसरा जोन शुरू हुआ, तो फिर उनमें प्रोटेक्शन कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सेज शेयर नहीं होंगे और वो आपस में एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। Further, the zone protection also overlap at this perspective. This is the one of the more important aspect about the overlapping concept of zones. In this diagram, you can see the zone 1 is overlapped and covered the area which is shared in between 2, 3, 5, 6 and 4 each other. So in zone 1 it is covered overlap by these zones as well. Zone 2 is a generator which produce electricity, then step up the voltages, connection made by the circuit breaker, further incoming line joined by the common bus. This network also the outgoing network which is driven by the load. This is the another prospect at zone 3 by which another load is driven by this network, and further the zone 6 and zone 5 also share interlink with zone 1 in by the step down transformer load utilization to the residential or commercial prospect. In this way, the bus bar directly drive that particular load. So this load would be driven by the industry. Similarly, these are the CT requirement for overlapping zones. If zones are overlapping, then the numbering of CT would be highlighted in this way. Another prospect of overlapping of zone protection you can see in this slide that a generator produce electricity that step up the voltages by a transformer which is interlinked with a common bus. It provides a supply to the bus and bus also drive three circuits further. The starting of circuit, if I nominate this zone 1 and this zone 2, then circuit breaker drive that supply of as an incoming to this bus bar. Further, three loads are also drive by these loads, and further the circuit number 1, 2 and 3. These are the single line diagrams, which means the three lines also drive by this bus bar. So these are the two backup circuits, and third one are another backup circuit which also provide and step down the voltages to utilize the loads by the bus, and further the protection scheme of circuit breaker also drive by this uh, after the transformer. At the end, the primary circuit of transmission line mentioned here, which drive the circuit breaker further as an incoming, and outgoing would be drive by you can say first zone, second, third, fourth, fifth, sixth, and this one is seventh, eighth, ninth, and 10th. So this is the mutual sharing of zone, which also represent the sharing of protection scheme which each and other by specified of zone. At the end, more three circuits of categorize. You can see here, you can see the further three circuits are drive by the bus. Okay, now we are talking about in this perspective why we drive electrical circuit into step down backup circuits by transformer, because some of the time we can say in some of areas there is sugar mill, they're kind of industrial sector, industrial city, industrial hub, some of the areas. So we need to be step down particularly in the in between transformer circuits by step down to utilize some load and provide the load to the industrial areas, industrial load by this prospect, and at the end the commercial and industrial circuit drive by at the end through by this networks, or we can say further the grid station substation further drive by these circuits. Hopefully up till now all these scenarios
consequences and factors have been clear in your mind regarding the zones of protection in this slide of lecture. सर एक चीज पूछनी है जी सर, बैक करिएगा सर। ये मतलब ये बस बार के ऊपर ये जोन बना हुआ है जी सर, मतलब ये भी कोई प्रोटेक्शन स्कीम है या मतलब इसको इंटरकनेक्टेड कर रहा है? मतलब ये जो डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं या इन यस ब्लॉक्स सर। की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, ब्लॉक तो ब्रेक कर रहे हैं तो पता है मुझे जी सर। मतलब ये डॉटेड लाइन जो मतलब बस बार के ऊपर बनी हुई है, मतलब के जनरेटर से लेके वो थ्री जो ट्रांसमिशन जा रही है इनको जो आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है, मतलब ये इंटरकनेक्शन की लाइन है या फिर ओवरलैपिंग है सर? ये चीज समझ में नहीं आई। अच्छा, इस चीज को ओवरलैपिंग जोन प्रोटेक्शन कहते हैं। इस वजह से कहते हैं क्योंकि पहला जोन अगर इसकी ओवरलैपिंग में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम यहाँ पर कोई फॉल्ट मॉनिटर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बैक एंड फोर्थ भी करता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब ये प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर इक्विपमेंट्स, रिले सिस्टम, स्कीम ऑफ स्विच यार्ड जब ऑपरेट होते हैं तो उन उस फॉल्ट का इम्पैक्ट जो कि यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, वो तमाम का तमाम दिखाया जाना जरूरी है कि ये इसके जोन में भी शामिल होते हैं। इसलिए जब फॉल्ट अकर होता है तो वो फॉल्ट करंट बैक एंड फोर्थ, फोर्थ यहाँ करता है और बैक यहाँ करता है। तो इन सब की ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्शन नेटवर्क प्रोटेक्शन स्कीम को प्रिवेंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इन डॉटेड लाइन से, कि जो इस एग्जिस्टिंग जोन के साथ ये इंटरलिंक होते हैं तो फॉल्ट का इम्पैक्ट यहाँ भी आ सकता है और यहाँ का फॉल्ट का इम्पैक्ट यहाँ भी आ सकता है। तो जब हम प्रोटेक्शन स्कीम के जरिए इसे एंटरटेन करते हैं, डील करते हैं, तो इस फॉल्ट का चांस काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है यहाँ और यहाँ जाने का, जो कि जा भी सकता है। इसीलिए इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है कि अंदाज़ा हो सके जब फॉल्ट प्रोड्यूस हो तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है इन ब्रांचेस के जरिए और बैक एंड फॉल्ट कहाँ कहाँ कर सकता है। इसीलिए नेटवर्क के अंदर ओवरलैपिंग को दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब फॉल्ट का इम्पैक्ट क्रिएट होता है तो वो डायरेक्टली हम सोचते हैं वो सिर्फ आगे जाएगा लेकिन वो बाद में पीछे भी चला जाता है। तो इसीलिए क्योंकि वो उसके जोन में शामिल होता है, आप चाहें उसको कंसिडर करें या ना करें, वो उसके जोन में शामिल होता है। इसीलिए जो अमूमन कंसल्टेंट और इंजीनियर्स होते हैं, साइट इंजीनियर्स, वो इस तरह की डायग्राम्स बनाते हैं जोन पर्सपेक्ट के लिहाज से कि जब हम प्रोटेक्शन स्कीम्स को डिज़ाइन करेंगे तो फॉल्ट करंट, ओवर वोल्टेजेस जो कि लाइटनिंग के इफेक्ट के नतीजे में या फिर सर्च के नतीजे में डायरेक्टली उसका जो इम्पैक्ट आता है वो बैक एंड फोर्थ करता है, तो वो किन किन पॉसिबिलिटीज में जा सकता है उसको इन डॉटेड लाइंस ऑफ जोन से रिप्रेजेंट किया गया है। आई थिंक यहाँ तक इस बात का आपको सही अंदाजा हो गया होगा और कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। यस सर। तो सेशन के लिहाज से यहाँ तक हमने जोन ऑफ प्रोटेक्शन ओवरलैपिंग पर्सपेक्ट्स को डिस्कस कर लिया कि इनका इंटरलिंक दूसरे से क्या होता है और वो फॉल्ट का इम्पैक्ट जो आपस में बैक एंड फोर्थ करता है, जोन टू जोन वेरी करता है, जो एक जोन से दूसरे जोन में ड्राइव भी करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और इनका इम्पैक्ट किस तरह से दूसरे जोन्स को इफेक्ट कर सकता है, ये हमने डिस्कस किया है अब तक। फर्दर हम अपने सेशन अच्छा को सर, एक चीज और पूछनी थी उसके अंदर जी सर, बैक करना सर। मतलब ये दूसरा वाला जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये मतलब रेजिडेंशियल लोड है या इंडस्ट्रियल? उसके ऊपर से जो बैकअप लाइनें हैं मतलब वो तो अभी हमारे पास स्टेप अप हो रही होंगी, बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब वो लोड तो यूज वाला है ही नहीं अभी तो, ऐसा बिल्कुल। ही है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने और इसके ये बारे लोड जो है सर ये रेजिडेंशियल में आएगा या इंडस्ट्रियल में आएगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे। असल में बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जहाँ हम जनरेट कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे जनरेट हो रहा है ना वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल हब भी है। जो इंडस्ट्रियल हब से मुराद जैसे नॉर्दर्न बाईपास पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं जहाँ पे शुगर मिल्स हैं और इसके अलावा टेक्सटाइल मिल हैं और इसके अलावा जहाँ मार्बल इंडस्ट्री है, ये पूरा एक इंडस्ट्रियल हब है। तो जनरेशन नॉर्दर्न बाईपास पे जैसे हॉक्सबे के रोड पे हो रही है तो वहाँ से कुछ इंडस्ट्री अगर डायरेक्टली ड्राइव हो रही हो तो उनको रन होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो रिक्वायर्ड है। तो होता यह है कि जब आप एक पावर ट्रांसमिशन लाइन गुजार रहे होते हैं तो वहाँ के करीब इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल हब को, इंडस्ट्रियल सिटी को साइट
किस्म के एरियाज होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो कि रास्ते में आपको पड़ते हैं। जैसे नॉर्दर्न बाईपास में इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पावर प्लांट से भी आ रही है, वहाँ पे हॉग्स बे कैनप के जरिए भी यूनिट 1 यूनिट 2 से आ रही है। तो इसके करीब करीब में जो वो सर्किट्स इलाके जो कि रिहाइश पजीर हैं और इंडस्ट्री जो रिहाइश पजीर है, इंडस्ट्री पूरी लगी हुई है वहाँ पे, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड देने के लिए आप करते ये हैं कि वहाँ से सर्किट ड्राइव करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप डाउन करते हैं और वहाँ से इंडस्ट्री को डबल सर्किट बिजली सप्लाई प्रोवाइड करते हैं बैकअप के तौर पे, और इस तरीके से वो इंडस्ट्री ड्राइव भी कर पाती है। ये वजह है कि हमने एक चलती हुई पावर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए से एक तीसरा सर्किट जो डिज़ाइन किया वो स्टेप डाउन करके एक इंडस्ट्री को ड्राइव किया है, ताकि इंडस्ट्रियल हब एक ड्राइव हो सके और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो पूरी हो सके। होपफुली यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो सर गई। ये 11 केवी है। जी जी 11 केवी बिल्कुल 11 केवी। जैसे ये 500 केवी होगा या 220 केवी होगा तो उसको स्टेप डाउन किया जाता है 11 केवी में। वैसे ये एक ट्रांसफार्मर नहीं करता, 220 केवी से 132, 132 से फिर 11 और स्टेप डाउन 11 से फिर वो फर्दर जब इन सर्किट्स में जाते हैं तो फिर वो अपने